round of applause. Let's welcome Mr. Bhushan. Ellipsis Entertainment से Mr. Tanuj Garg, Mr. Atul Kasbekar and Ms. Shanti Sivaram Maini. T-Series और Ellipsis Entertainment के co-producers को Ms. Priya Gupta और Ms. Swati Iyer Chavla को. और आखिर में T-Series के President Marketing Media Publishing Mr. Vinod Bhanushali, President Digital and Legal T-Series Mr. Neeraj Kalyan और इस फिल्म के National Distributor Mr. Anil Tadani को. So I believe everybody is here. Thank you so much for giving us this fantastic trailer, and they all deserve our. Sorry, ma'am. Ji, please. Can I call a couple of people? Sure, ma'am. Sure. More on stage. Seema, Sindhu, Trupti. Can we please have you all on stage? Saurabh, Dhara. Saurabh and Dhara, please. Abhishek! Where are you? I've not seen you today. Come. Deepika, please. Manan. Priyanka Mehta. We can actually fill up this stage because everyone who's come from our side has worked so hard on this film. But big Jadoo ki Jhappi to each one of you, Mahesh, Ishan, Manan, all of you. Oh, yeah, great, he's here. So everybody is here, you. and it's now time for the question and answer session. So I open the floor to media. Yeah, आप pictures कर लीजिए, उसके बाद question answer. तुम्हारी सुलू! 17th November, very important. 171117. क्या बात है? 171117. 17 नवंबर. मेरा नंबर है. The date. लिख लो. 17. मैम पहले तो 9 भी आता ना उसमें. Silent. Nice, wonderful. 17th of November, that's the date, of course. And any questions, the floor is open. Please, I would request the team to please give them the mic. Hi, Vidya. Vidya here. Hi. Hi. Look, this side. Hi. I'm from Navbharat and wanted to ask you this. You're playing an RJ. Yeah. And for real, if you were an RJ for a night and if a political party bans your show, how would Sulu, Tumhari Sulu, that is Sulu. Oh my God, I've never thought of something like that. Actually charm them. I'd say, अच्छे दिन आ गए हैं, रेडियो ऑन कर दो. Hi Vidya. Hi. Hi. So the trailer is awesome. Thank you. So I just want to ask you and Suresh sir. So this movie is fun-loving and vibe and giving the Rishikesh Mukherjee kind of vibe. क्या बात है? So yeah. So Thank you. Just want to ask you. So do you think the below the pile of social and the real movies? So we forgot to have fun from the movies. I definitely think I've not had fun on screen for a while. Okay. You know, I've been playing very sangeen, bhari characters, but I've enjoyed myself. बहुत वक्त बाद एक ऐसा किरदार मेरा जो बहुत मुस्कुराती है, हंसती है, हंसाती है. So you know, I do think it's so precious to be able to smile and laugh, and if a film is able to do that, it's amazing. I was definitely missing that in my life. I got Tumhari Sulu. So I'm glad. Okay, this is for Vidya. Vidya, if you can hear me. One second, I just want to add something. Yeah, please Very go ahead. interesting you said that, because when we first read the script, it took us back to the era of Rishida and Bashu Chatterjee kind of movies. And for Ellipsis, it's very important for us to look at spaces that have not been explored. So for example, like Neerja, nobody had done a hijack film. We said, let's explore the space. Nobody had done a gentle, well-written, urban, slice of life, comedy-esque kind of script in a long time. So when we read it, it took us back to exactly what you said. So thank you, good, that worked. Okay, Vidya here. It's okay as well as you can hear me. Yeah, hi. How are you? Vidya, the trailer look, you know, it is really promising, you know, जिस तरह का trailer है, बहुत impressive trailer है, और कहीं बीच में इस बात की भी तरफ इशारा करता है कि there is thriller, there is some suspense, जिस तरह का जो हमें महसूस हुआ. What is the most challenging part, और खास करके जब हम बात करते हैं इस लहजे में आप बात करें, hello, वो उसके लिए क्या कुछ खास
you know, सब workshop वगैरह करी थी कि you needed to be in the character, you know. How difficult was it? What was the most challenging part? I think this film was. I think Suresh will probably be able to answer this question better. Because मैं जब हंसने लगती हूँ तो मुझे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Situations फिल्म में इतने funny हैं, जिस तरह से इन्होंने improvise भी हमसे करवाया. तो I think just not to laugh in the scene was a big challenge for me. For me, I don't know whether there's any challenge left for Vidya Balan to do in terms of it's very difficult to give a challenge to Vidya Balan. How much you relate to the character? But you know, बहुत ये जो है ना, it comes from the fact that Suresh would constantly tell us this. वो balance में रखना, हाँ, humor भी हो, जो भी हो. तो I think to keep that in fine balance is really an art. Comedy में ज़्यादा नहीं, emotional में ज़्यादा नहीं, बहुत बस महसूस करके वो कर जाना. I think that he was constantly, he constantly made us do on set. So if at all I have to call it a challenge, I'll say it was that. I think the summer was a big challenge. Okay, casting plays a very important part, Suresh. You know, Manav, we have seen Manav work, और मानव ने जिस तरह का सिनेमा किया एकदम अलग, एक अलग तरह की उनकी पहचान रही है, और इस तरह का किरदार निभाने के लिए, you know, जैसे आपने कहा कि विद्या तो आपके जहन में शुरू से थी, क्या मानव भी, it was always there in your mind, you want Manav to play the lead? Manav, just wait for the film. मैं बाकी चीज़ों की, I mean, about her performance, all my actors, but इनका performance, just wait and watch. Okay, just wait and watch. The thing was, it was not a very easy decision. लेकिन अगर मैं इनको, I mean, if you had not selected him, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती वो. क्या बात है. मानव, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और आपको, you know, विद्या जैसी शख्सियत फिल्म का हिस्सा है. With all due respect, I respect you. Everyone respect you as an actor. जहाँ विद्या जैसी शख्सियत, विद्या जैसी एक्ट्रेस, विद्या जैसी लीजेंड फिल्म का हिस्सा है, वहाँ इस बात का कहीं नर्वसनेस या डर था कि ओवरशैडो हो जाएगा सब कुछ, और या फिर कहानी ऐसी थी कि लगा ही नहीं? नहीं, असल में जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, इन्होंने नरेशन दिया था मुझे, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगी थी, और मैंने इनसे कहा था कि मैं कहा आप बहुत कमाल और कॉम्प्लेक्स हो, वेरी वेरी ह्यूमरस स्क्रिप्ट है, और मतलब मैं तो चाहता था कि मैं डरूं, मैं चाहता था कि मैं थोड़ा कांपूं कि मैं विद्या बालन के साथ काम कर रहा हूँ और पहला सीन और ये वो. इन्होंने मौका ही नहीं दिया. ये तो आते से ही ऐसी हो गई. मैंने कहा अरे ये तो ठीक है, फिर तो आराम से होगा काम. हाय विद्या, आपके सामने. विद्या, बहुत ही अमेजिंग ट्रेलर है. थैंक यू. मैं जानना चाहूँगी आपका जो सॉन्ग है हवा हवाई, वो श्रीदेवी का आइकॉनिक सॉन्ग है. उनका क्या रिस्पॉन्स रहा गाना सुन के, एंड साथ ही क्या वो यहाँ पे सॉन्ग प्रमोशन में हमें नजर आएंगे आपके साथ? Tanuj Garg, take over. Yeah, I think Bhushan, Atul, and everyone has spoken to Sridevi, so she will be there for the song launch. Yeah, done? Any more questions? Yeah, I think there's one which is there, I suppose. One sec. You, ma'am, please. Hello. Acha, okay. Please, sir, continue. Huh. Wow. Sanil. Cricket, eh? Tough सवाल मत पूछना. Vidya, I will come to you. Manav, so nice to see you in a leading role. The romance between you and Vidya is extremely endearing. How was it like romancing Vidya on screen? And Vidya, same question to you. मतलब मेरे ख्याल से मैंने इतना ज़्यादा कोई एक्टर नहीं देखा जो इतना ज़्यादा देता है अपने को एक्टर को. एंड मैं पूरे समय विद्या की बस आंखों में देख रहा था और मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा था. बाकी जो कर रही थी वो ये कर रही थी. थैंक यू विद्या, थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू. मैं इन्होंने मेरी सारी बातें छीन ली. पर यू नो आई डोंट नो कि क्या हुआ. पहले रीडिंग में एक सुरेश ने कहा कि एक सीन पढ़ रहे थे एंड नेचुरली कुछ हो गया. वो मैजिक क्रिएट हो गया हम दोनों के बीच. आई थिंक वी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली we trusted each other instantly.
आई थिंक वो एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है. वो गिव एंड टेक तभी हो पाता है जब दो एक्टर्स एक दूसरे पर विश्वास कर सकें. और हम दोनों के पीछे आई डोंट नो कैसे हो गया है कि तुरंत दोस्ती होगी, पर आई थिंक उनके साथ मुश्किल नहीं है. ही इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन. तो थैंक यू बस इसके आगे अपनी बात को बस नहीं एक्टिंग इज अबाउट रिएक्टिंग. सो थैंक यू फॉर योर थैंक यू एंड थैंक यू सम मोर. थैंक यू. Vidya, also you're a part of CBFC now. How is the new role shaping up? What are the challenges and how do you see the future forward? You know, honestly, I don't want to speak about it much here, but I'm enjoying being a board member. I think a lot of people don't know what it really means to be a board member. हम हर फिल्म नहीं देखते. जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी देखते हैं. तो अभी तक मैंने बहुत कम फिल्में देखी हैं, which is good news.